Hello, good evening everyone. Welcome to BYJU'S exam prep. So today we are starting a new series which is a challenging question series. So in this series I am going to take some questions of the previous textbook questions like the previous year according to the previous year the books that is important for your exam, not only for just giving you the solution of the textbook, but it is the textbook which is the favorite textbook for the from the IDs. Okay, so the number of questions they have asked in the previous years, so you can expect the question directly from these textbooks. So that is why ये important हो जाता है ना? तो जल्दी से ये सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ. So before starting this session, and I want to tell you about myself. So this is Saket Verma, and I have done MTech from IIT Guwahati and cracked the different PSU exams. And you know, I am having more than 13-year experience in the field of GATE and ESE, and I am teaching the communication system since last 13 years. So I can, tell you the which book you should prefer, what type of question you should prepare, because there are multiple questions that can be asked from the particular subject. But which kind of question you should prepare? What are the standard level of the GATE examination that I can tell you? And one more thing that is about the Telegram group. So the Telegram group, I will be sharing you the link of the upcoming session, and also if you need any particular solution for any particular doubt, if you are having, then I can come with the solution. After that, you should also aware about the upcoming courses of the GATE examination, and you are getting the 90% scholarship test. If you get the every Sunday you have the scholarship test, and if you do well in the scholarship test, you may get avail up to the 90% of the discount. So next test is on 5th of November, and there is a workshop also on 8th of November on roadmap to secure at AIR 100 in gate 2025 at 7:30. So this is the first question for the gate examination point of view. The first part of this question you don't need to solve, okay, because this is the drawing the spectrum. So that is okay if you don't solve this. So I will be giving you 5 minutes to give the answer of the some part if you want to solve by yourself, because definitely I will be giving you the solution for all the questions, but you should be able to solve the questions by your own, at least some part of this question. And this is the question from the communication system, analog communication, especially from the book Proakis. So I'm following the Proakis book for this particular series, the two session series I am bringing. Today analog communication, tomorrow digital communication.
So an AM signal has the form U of t is equal to 20 plus 2 cos 3000 pi t plus 10 cos 6000 pi t cos omega ct. So you don't need to draw the first part, that is the sketching. So you have to solve for the last three parts of this question. So how many of you are able to solve this? So Anant, 0.5, and you are saying for second it is 200 and 2.5. Okay. And what about the last part? We have only 1 minute left. 30 seconds. Determine the power in each frequency component, it is saying. Okay. So let's solve this question. So in this question, it is given that U of t equal to 20 in bracket, in fact inside the bracket, 20 plus 2 cos 3000 pi t plus 10 cos 6000 pi t. Okay, and cos omega c. Now, because we want to calculate the power in each sideband as the first part of this question, power in each sideband, what we have to do is we have to open the bracket. So this u of t will be 20 cos omega ct plus 2 cos a cos b formula we can apply. So cos a plus b, so omega c plus 3000 pi t plus cos A minus B, that is omega C minus 3000 pi t, right? So 2 cos A plus B and cos A minus B, and here we will get 5 cos omega C plus 6000 pi t plus 5 cos omega C minus 6000 pi and then t. Okay, so in this way, we will get the each component. This is your carrier component. This is your first upper sideband, second upper sideband, first lower sideband, and second lower sideband. Okay, so the power in carrier. If I say the power in carrier, so power in carrier is this is 20 square divided by 2, so it is 200 watt, right? So this is the first answer that you got. Power in each frequency, we want power in each frequency component. So power in the, let me represent it as a carrier, this as a first upper sideband, and this is as a first lower sideband, and this is second upper sideband, and this is second lower sideband. Okay, so I am representing first upper sideband as a P1, first upper sideband as a P1. So this is 1 square divided by 2, that is 0.5, and P2, that is the first lower sideband, that will also have the same power. So I'm writing here P2 is equal to 1 square divided by 2 is equal to 0.5. The third term is this term. So third term is having the power 5 square divided by 2, amplitude square divided by 2. So it is 12.5 watt and same as the fourth component. So this is the different five
component for which we want to calculate the power. Okay, Anand. So this thing, I think, I don't know why you have calculated to 0.5. Okay, 0.5 you calculated, but for the third part, let me see what is the third part. So determine the modulation index. It is asking to calculate the modulation index as well. So to calculate the modulation index, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AC 1 प्लस के एम टी एंड कॉस ओमेगा सी टी. इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो. तो उसके लिए मुझे 20 कॉमन लेना चाहिए. 1 प्लस 0.1 आ जाएगा. कॉस ऑफ 3000 पाई टी एंड 1 बाय 20 आ गया यहाँ पे 0.5 cos of 6000 pi t and then cos of omega c t. ठीक है. So this is your first modulation index MA1 and this is your second modulation index MA2. So the net modulation index will be root over MA1 square plus MA2 square. So zero point 0.1 square plus 0.5 square and root over it is 0.51. ठीक है, 0.51 आएगा. तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज determine the power in the sideband, the total power and the ratio of the sideband power to the total power. So सबसे पहले आपको रेशियो ऑफ द साइडबैंड पावर कैलकुलेट करना है. टोटल पावर इन द साइडबैंड. तो हम लोग आते हैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट. इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ. फोर्थ पार्ट, पावर इन द साइड बैंड. तो साइड बैंड का पावर है, ये चारों पावर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास साइड बैंड का पावर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4. ये चारों साइड बैंड है. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास 0.5 टू टाइम्स आया है और 12.5 भी टू टाइम्स आया है. ठीक है. तो ये 12.5 को टू टाइम्स करेंगे तो 25 हो गया और ये आ गया 1. तो 26 वॉट आ जाएगा. तो 26 वॉट ऑफ पावर आ जाएगा साइड बैंड में. देन पावर इन द साइड में निकल गया. टोटल पावर कैलकुलेट करना है. टोटल पावर कितना होगा, कैरियर पावर को ऐड कर दो. तो टोटल पावर हो जाएगा कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर. कैरियर पावर कितना था 200 है ना, और यहाँ पे कितना आया 26. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 226 आ जाएगा. सो 226 वॉट ऑफ पावर आ गया. ठीक है, 226 आ गया. यस. ठीक है, 226 आ गया. अब हमको इसमें रेशियो निकालना था साइड बैंड पावर और कैरियर पावर, टोटल पावर का. साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर. साइड बैंड है 26 और ये है आपका 226. सो 26 डिवाइडेड बाय 226 रफली अराउंड 0.115. तो ये हमारे पास रेशियो आ गया. तो इस तरीके से हम लोग ये 4 डिफरेंट पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं. कोई डाउट इसमें? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सो आपके पास सेकंड पार्ट आ गया जिसमें आपको टोटल हर साइड में का पावर निकालना था. फिर थर्ड पार्ट है जिसमें आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना था. फोर्थ पार्ट है जिसमें आपको ओवरऑल टोटल पावर और साइड बैंड पावर और उसके रेशियो निकालने थे. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. थोड़ा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बट हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सेम टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं.
An AM signal is generated by modulating the carrier FC is equal to 800 kilohertz by the signal MT is equal to sin 2000 pi t plus 5 cos 4000 pi t. ठीक है, दो बार लिखा है. AM is UT is equal to 101 plus MT cos omega CT is fed to a 50 ohm load. Determine and sketch. Again ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है. हाँ, determine and sketch वाला नहीं करना है. Determine the average power in the carrier and in the sideband. What is the modulation and what is the peak power delivered to the load? Last 2 minutes. Power in sideband carrier power is 5. Sideband power is 1.25, 31.25 in kilowatt. Modulation index. Last 20 seconds. What is the peak power delivered? You are saying 31.25. And what is the modulation index? You have not calculated, I think. MT is equal to sin 2000 pi t and 5 cos 4000 pi t. Okay, so now let's move into the question again. U of t is equal to 100 1 plus mt, right? 100 1 plus mt. And k is 1 here, so sine 2000 pi t plus 5 cos 4000 pi t. So if we compare, because the k is 1, the modulation index for the first one is 1, the second modulation index is 5. So again the total modulation index when we calculate, this is MA1 square plus MA2 square. So it is root over 26, and what is root over 26? Around 5. Root over 26 we get modulation index. Okay, wait.
It is 5 na? It is going more than 5. That's why you have not answered, right? More than 1 it is going na? This is the same problem or not? Wait a second. Hmm. हाँ वही मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। देख अभी देख लेते हैं, उसको 2 मिनट लगेगा कि कैसे आप इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स तक पहुंचोगे। हो भी सकता है कि हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स ज़्यादा ही आ रहा हो, है ना। हो नहीं सकता मतलब जनरली होता नहीं है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरीके से कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, सो समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि वो लोगों का सोचने का या लिखने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट हो जाता है, तो इस वजह से मॉड्यूलेशन इंडेक्स वहाँ पे गलत आ जाता है, मतलब अलग आ जाता है। गलत तो नहीं बोलेंगे, इट इज मोर देन 5 ओनली। सो कितना आ रहा है 5.1, तो हम लोग को इसको यही मान के सॉल्व करना है 5.1, लास्ट क्वेश्चन जैसे। लास्ट क्वेश्चन में भी था ना हमारा ये 0.51 आया था, इस बार आपका ज्यादा है, जैसा वैल्यू दिया है उसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 101 प्लस के नहीं दिया हुआ है तो वही आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, हमारा थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या था, सेकंड, डिटरमाइन द एवरेज पावर इन द कैरियर। सो कैरियर यहाँ पे कॉस है, कॉस 2 पाई एफ सी टी है। सो सेकंड पार्ट में आते हैं, तो कैरियर पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कैरियर का एम्पलीट्यूड है 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 5 किलो वाट आ रहा है। हाँ, इसीलिए साइड बैंड भी लार्ज हो गया, साइड बैंड लार्ज पावर वो भी लार्ज हो गया। ठीक है, एक बार ये हो गया। और क्या चीज चाहिए मुझे, एवरेज पावर ऑफ द कैरियर नहीं गया, साइड बैंड, इन द साइड बैंड कितना पावर आ जाएगा, तो साइड बैंड आ जाएगा जस्ट यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो 1/2 इसका एम्पलीट्यूड है ना, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 100, अच्छा 50 है, 50 एम्पलीट्यूड है तो 50 का होल स्क्वायर, तो अगर मैं फर्स्ट अपर साइड में मतलब मान लूँ, तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 1.25 किलोवाट निकाले थे, ठीक है। 1.25 किलोवाट ये शुरू के दोनों अपर साइड में और लोअर साइड में आएगा। फिर ये थर्ड वाले में आ जाओ, तो थर्ड वाले में आ गए अपन P3 और P4 जिसको बोल रहे हैं, है ना, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। सो आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन अगर 2 को छोड़ दे तो 250 आ गया, तो 250 का स्क्वायर, सो 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सही है। 5 into 100, 500 हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा 31.25 निकाले थे, हाँ 31.25 किलोवाट, ठीक है, सही है सही है। तो ये वाला पार्ट आपका आ गया था। अब इसके बाद हाउ मच पावर डिलीवर्ड टू द लोड, डिलीवर्ड टू द लोड, पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड में कितना पावर होगा, पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस एम ए टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। अब अच्छा एक चीज और है, पीसी में एक चीज मिसिंग हो गई अपन से कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया था, तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिखना है 2R, सो डिवाइड बाय 50 भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 50 आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, किलोवाट में था तो 0.1 किलोवाट कर लेते हैं इसको, 0.1 किलोवाट, ठीक है, तो पीसी आ जाएगा 0.1 किलोवाट में, और 1 प्लस 0.51 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करो इसको, तो ये पूरा आंसर किलोवाट में आ जाएगा। 1 प्लस 0.51 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1, देखो ये तो बहुत ही कम, 0.11 किलोवाट, 0.11 किलोवाट आपका, ठीक है। 0.11, ये आर छूट गया था आपसे और मेरे से भी, यहाँ पे ये जो 50 ओम लोड दिया है, तो लोड जब रहेगा तो AC स्क्वायर बाई 2, अच्छा एक सेकेंड, फिर तो सभी में एप्लीकेबल रहेगा, आर तो सभी में एप्लीकेबल रहेगा, तो इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, तो इसमें भी डिवाइड बाय 50 होगा, और इसमें भी डिवाइड बाय 50 होगा, ये वाला पार्ट मेरे से भी मिस हो गया, इसमें भी तो रेजिस्टेंस आएगा ही ना, ऐसे थोड़ी इसको छोड़ छोड़ सकते हैं। P3 P4 50 से डिवाइड करो तो
1.25 डिवाइडेड बाय 50 किए कितना है 0.025 इंटू 1000 कर लेते हैं तो 25 तो ये आ जाएगा 25 वॉट। फिर 31.25 इंटू 1000 कर लो डिवाइड बाय 25 कर लो 50 50 625 तो ये 625 ये किलो में था। ठीक है अभी देखो अनंत अब देखो पावर बहुत ज्यादा हाई भी नहीं लग रहा। ठीक है 100 वॉट। अब देखो ये चीज ये है कि 625 प्लस 25 प्लस कितना ये 100 ये सबको जोड़ने पे 750 आ रहा है और यहाँ पे हमारा ज्यादा कैसे आ गया। तो टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड। हाँ टोटल पावर डिलीवर्ड टू द अच्छा मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना। मल्टीप्लाई बाय 2 2 से मल्टीप्लाई 300 आया 625 दो बार है 0.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50 625 इंटू 2 किए तो 1250 ऐसे ही हो गया। फिर प्लस 50 भी कर दिए 1300 प्लस 0.1 इंटू 1000 यहाँ से हमारा क्या रहती है टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड ना। देखो टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड यहाँ पे दोनों तरीके से अलग अलग आंसर आ रहा है। तो मैं इसमें बेटर ऑप्शन क्या होगा। अगर आप टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड निकालना चाहते हो तो बेटर ऑप्शन यही है कि हम सारे पावर्स को ऐड कर लें। टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड अराउंड 72 वॉट आ रहा था वन 72 ठीक है चलेगा 0.1 इंटू 1000 कर लेंगे तो चलो ठीक है 100 के आसपास। ओके डन सो this is the one of the question that has been asked in the gate examination. This is the direct question that was asked in the gate examination. So you can solve this very quickly. ठीक है ये क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो बिकॉज इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैंने 0.51 लिया है ओके इसीलिए आंसर थोड़ा डिफरेंट लगा। यस अनंत 5.1 है ये 5.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 तब आ जाएगा 5.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू 0.1 हाँ ठीक है ये 1.4 किलोवाट आ रहा है। ठीक है अभी अभी तो अब मैच किया है। ओके इसमें टाइम पर बढ़ा देते हैं। ये तो टाइमर ही गया। चल फिर से ठीक है अनंत यस 5.1 था मैं वो लास्ट वाले क्वेश्चन के ही तरफ 0.51 ले लिया था बीच में अपन लास्ट क्वेश्चन में गए थे ना तो उस चलते हैं।
MT10 cos 2 pi t। ठीक है, मैसेज सिग्नल क्यों, तो हाँ, मतलब उसको नहीं भी लिखोगे चलेगा यहाँ पे भी अगेन, बट ठीक है, अच्छी बात है आप लिख दिए हो। म्यू 0.5, ठीक है। 1.125। देखो अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं, तो अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे कॉस हैं तो साइनसोइडल सिग्नल है, तो साइनसोइडल सिग्नल के लिए अगर हम एज्यूम कर लें कि ये साइनसोइडल सिग्नल के फॉर्म में रहेगा, तो 1 + ma कॉस ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब यहाँ पे आ गया ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए अपॉन 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी एंड ए सी एम ए बाय 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ठीक है, इसको अगर कंपेयर करें तो जो दो सिग्नल जिनके एम्पलीट्यूड सेम है, द सिग्नल्स विच आर हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड विल बी द साइड बैंड्स। सो अगर एक्सप्रेशन आपको लिखना है तो साइड बैंड का और कैरियर का, तो यहाँ से हम सेपरेट करके भी लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्या सेपरेशन वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन लिखने नहीं आएगा, बट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज सिग्नल हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 cos 200 pi t, क्योंकि ये 2000 वाला सेंटर पे है, 2000 पाई टी, तो 200 पाई टी आपका मैसेज होना चाहिए, क्योंकि अपर साइड में 200 सब्ट्रैक्ट करोगे, 200 ऐड करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। और कैरियर हमारा कितना हो गया सेंटर वाला, विच इज 20 cos 2000 pi t। ठीक है, ये हमारे पास दोनों पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किए, सो वी आर गेटिंग ए सी इज इक्वल टू 20 और ए सी एम ए बाय 2 इक्वल टू हाउ मच 5। सो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, विच इज 10/20 विच इज इक्वल टू 0.5। तो सेकंड वाला पार्ट भी आ गया। थर्ड वाला पार्ट में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ पावर इन द साइडबैंड टू द कैरियर पावर। सो रेशियो ऑफ साइडबैंड पावर टू द कैरियर पावर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ साइडबैंड पावर टू द कैरियर पावर, तो साइडबैंड पावर कितना होता है, दिस इज पी सी एम ए स्क्वायर बाय 2, और कैरियर पावर और साइडबैंड पावर का अगर मैं रेशियो निकालूंगा, सो दिस विल बी एम ए स्क्वायर बाय, हाँ, डिवाइड बाय 2। Yes. So this is the 1/2 whole square divided by 2. So 1/8, which is 0.125. Yes, this is the ratio. Hello Ashish, good evening. So 0.125 is the right answer for this. So these are the three part of the question. Next question. Sorry. Solve it. एनवेलप डिटेक्शन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 होना चाहिए एंड आरसी शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन एफसी एंड लेस देन 1 अपॉन एफएम। यस आशीष, गुड इवनिंग।
So the normalized signal Mn has a bandwidth of 10,000 hertz or simply 10 kilohertz, and its power content is 0.5 watt. The carrier A cos 2 pi f naught t. The carrier power is also given as 200 watt. चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं. देखो, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ Mn modulates the carrier using the single sideband modulation, what will be the bandwidth and the power content of the single sideband, है ना. मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कितना होगा पावर, ये भी पूछ रहा है. सो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर ये सिंगल साइडबैंड है, सपोज सिग्नल को हम ले लेते हैं एस टी. तो एस टी को अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक सिंगल साइडबैंड सिग्नल है ना, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सिंगल साइडबैंड सिग्नल. तो अगर ये सिंगल साइडबैंड सिग्नल है तो क्या होना चाहिए, हमारे पास जो सिग्नल होगा वो मैसेज ये फेज शिफ्ट मेथड से आएगा. तो एम टी ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस माइनस एम कैप टी, उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, और ए साइन ओमेगा सी टी के फॉर्म में होगा. ठीक है, अगर ये सिंगल साइडबैंड है तो इसका इसी तरीके से आएगा. अब बताओ पावर कंटेंट कितना होगा इसमें. तो पावर इन दिस, पावर कितना होगा फर्स्ट वाले टर्म में, ये आएगा एम स्क्वायर टी बार ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम कैप स्क्वायर टी बार ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना. तो ये जो ए स्क्वायर बाय 2 है ये तो कैरियर का पावर हो गया. अब इसमें आ गया तुम्हारे पास एम स्क्वायर टी बाई टू प्लस एम कैप स्क्वायर टी बाई टू टी. ए स्क्वायर बाई टू इज नथिंग बट द कैरियर पावर, है ना. कैरियर का पावर अगर आप निकालते, ये वाला टर्म है, इसका अगर मैं पावर कैलकुलेट करूंगा तो ए स्क्वायर बाई टू आएगा जो कि मुझे गिवन है 200. ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया कैरियर का पावर, और ये दोनों जो है वो उसके नॉर्मलाइज पावर है. तो यहाँ से आ जाएगा 200, और नॉर्मलाइज पावर कितना है 0.5 एंड 0.5. तो यहाँ से आ गया 0.5 एंड 0.5 यानी 1 हो गया. तो 200 वॉट इसका पावर आ गया. ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 200 वॉट. और बैंडविड्थ तो सिंपल मैसेज सिग्नल के इक्वल होगा. मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको दिया हुआ है 10,000, तो बैंडविड्थ कितना आएगा 10,000 ही आएगा, मतलब 10 किलो हर्ट्ज. ठीक है, देखो इसमें कोई दिक्कत. यस, नॉर्मलाइज पावर मतलब तुम्हारा सिग्नल का ही पावर होगा. पावर ही नॉर्मलाइज पावर हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मलाइज पावर ही कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पावर या नॉर्मलाइज पावर. ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 रहती है तो हम लोग उसको नॉर्मलाइज पावर बोलते हैं. तो सिंपल मैसेज का ही पावर आपको दिया हुआ है. हाँ, डीएसबी के लिए 100 वॉट विक्रम इज सेइंग. सो अब इसी मेथड से आप डीएसबी के लिए करोगे. तो अगर आप एस ऑफ टी को दिस टाइम नाउ यू आर सेइंग एज अ डीएसबी एस सी, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एम टी इंटू ए कॉस ओमेगा सी टी से. तो इसका पावर कितना आ जाएगा, सो इसका पावर आ जाएगा एम स्क्वायर टी बार यानी कि मैसेज का पावर एंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो मैसेज का पावर हो गया 0.5, एम्पलीट्यूड स्क्वायर 200 था, तो यहाँ से आ जाएगा 100 वॉट.
बिल्कुल ठीक। और बैंडविड्थ कितना होता है डबल साइड बैंड के लिए? बैंडविड्थ होता है 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ। तो 2 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ मतलब 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ। ठीक है, ये दो पार्ट। अब तीसरे पार्ट में, इफ द मॉड्यूलेशन स्कीम इज एम एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.6 देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट। मतलब सेम आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.6 अगर दे दें तो आपको पार्ट वन का आंसर निकालना है, मतलब आपको बैंडविड्थ और पावर निकालना है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। तो बताओ अब थर्ड पार्ट का क्या होना चाहिए? बैंडविड्थ तो 2 FM, हाँ इसका तो। अगर इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे, है ना, एएम के केस में अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे, तो एएम का बैंडविड्थ तो ठीक है, बैंडविड्थ तो 20 किलोहर्ट्ज ही होगा। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? एसी 1 प्लस के इंटू एम टी कॉस ओमेगा सी टी। मैसेज तो हमको दिया नहीं है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमको दे दिया। मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, अगेन वो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से नॉर्मलाइज्ड वैल्यू दे दिया है। तो एम ए की वैल्यू हम लोग के इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैसेज लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज कर दिए हैं, तो नॉर्मलाइज कर दिए हैं तो के और 0.6 में नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? उसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करके। तो वॉट एवर विल बी द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड उसकी मैक्सिमम वैल्यू से हम डिवाइड कर दिए, तो के कितना आ जाएगा इसमें? 0.6, राइट। सो द पावर कितना होगा? पावर इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो पहले वाले टर्म के लिए एसी स्क्वायर या कैरियर एसी स्क्वायर लिख दिया मैं यहाँ पे, ए लिख सकते हो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नोटेशन के अकॉर्डिंग जाना है। नॉर्मलाइज किए तो मैक्सिमम वैल्यू को उसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो पीक वैल्यू होती है मैसेज सिग्नल की उसको मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करते हैं, इसीलिए मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू तो वही होगा और पीक वैल्यू भी वही है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर टी बार डिवाइडेड बाई 2। तो ए स्क्वायर बाई 2 अगेन कैरियर का पावर, कैरियर पावर इज 200, और यहाँ से भी 200, के की वैल्यू मतलब 0.6 का स्क्वायर, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये आगे के स्क्वायर, मैसेज कितना दिया? 0.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे लगभग लगभग कितना आ जाएगा ये? 236। ठीक है, ये आ जाएगा 236 वॉट। सो 236 आ जाएगा। और बैंडविड्थ तो खैर ठीक है, बैंडविड्थ आपको मालूम है कि एएम के लिए बैंडविड्थ 20 किलो हर्ट्ज होगा। तो ये आपके 3 डिफरेंट पार्ट हो गए इसके। ठीक है, हाँ। फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट में इसी चीज को अब आपको एफएम करना है। तो एफएम के केस में आपका पावर कितना होगा, बैंडविड्थ कितना होगा? तो एफएम के केस में तो पावर आपका डायरेक्टली कैरियर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि यही आ जाएगा फोर्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट के लिए अगर मैं बोलूँ तो यही होगा टोटल पावर। और बैंडविड्थ निकालना है, तो बैंडविड्थ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स प्लस एफएम, राइट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है के एफ इंटू मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ। तो अगेन यहाँ पे जो के एफ है हमको दिया हुआ है, तो कैसे पहुंचोगे आप? बीटा, बीटा कितना हो जाएगा? डेल्टा एफ, डेल्टा एफ में के एफ इंटू ए एम, ए एम कितना है? 1। ठीक है, ए एम कितना है? नॉर्मलाइज है तो 1। तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया 2 इंटू बीटा कितना आ गया? के एफ, यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय एफ एम 10,000, ठीक है, प्लस 1 इंटू 10,000। सो ये कैंसिल हो गया, 120 किलो हर्ट्स। सो बैंडविड्थ आएगा 120 किलो हर्ट्स। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो।
पावर का फॉर्मूला अच्छे से विजिबल नहीं, कौन सा पावर, ये वाला ए स्क्वायर बाय टू ही तो है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट के लिए तो एफएम में जो पावर होता है वो कैरियर की पावर के इक्वल ही होता है। तो एफएम का जो पावर है वो डायरेक्टली ए स्क्वायर बाय टू है, यानी कि 200 वॉट हो जाएगा। और बैंडविड्थ 120। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, चल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। Got the answer? 2400 delta F. See, again, the expression part you should not do. The expression part you should not do.
What is the maximum frequency deviation of the modulated signal that we have to solve? 2400, 1200 you are getting. Yes, 2800, 5000. Okay. See, here the modulation index is given. If I go and solve for the second part directly, then we know that the beta is equal to delta f upon the maximum frequency, and we want to calculate the maximum frequency deviation delta f max. So from here we will get delta f max is equal to beta into fm. What is beta? Beta is 6. Message signal frequency is 200, right? So it is 200. From here it is 200 hertz because it is 400 pi. So 400 pi means divided by 2 pi you will get. So from here you are getting 1200 hertz. That's correct. Now we want to calculate what is the power. So power content is again given by PC only. Power content is nothing but the AC square by 2. So AC means 100. So 100 square divided by 2 is equal to 5 kilowatt, right? Now the bandwidth is directly we can calculate by the beta plus 1 into fm. So beta is 6 plus 1 7 into 2 14 into fm is 200. So this is 2800. 2800, correct. So these are the right answers. Now okay, let's solve this.
Last 2 minutes. 2 pi kf. 2 pi kf you are getting as your kp. Anant is saying 2 pi kf. Okay, let me check what would be the right answer. The relation between these two we have to find. And what is FD? FD is, I think there is a misprint. Is that? Yes, okay. Kp is equal to, okay, maximum instantaneous frequency in each case. Kp and FD both are 1. Fine. So the answer is not the correct one. Kp is equal to not 2 pi kf. So first of all, we have to find in this question, find a relation between Kp and Kf such that their maximum phase of the modulated signal in both the cases are equal. So one is PM, another is FM, right? The signal is used to once frequency modulate the carrier and once to use the phase modulate. Yes. So we will write the standard expression for both. That is your, suppose it is your PM. Okay, suppose it is a PM. So what is the standard expression? S of t is equal to AC cos of omega c t plus kp into nt. Okay, so the maximum phase deviation it is saying, na? Maximum phase deviation. So what is the maximum phase deviation? So maximum phase deviation is kp into maximum value of message and it is kp. So because the message signal has the maximum amplitude 1, so it is kp only. Now let's talk about the FM. For FM, the maximum phase deviation, first of all, we will write the expression. So omega ct plus 2 pi kf integration from minus infinity to t m tau d tau. Okay, so this is maximum phase deviation we have to calculate. So maximum phase deviation will be 2 pi kf and then maximum value of integration from minus infinity to t m tau d tau. So now when we will integrate it, here there are many different values of t. Okay. So first case, if I take the tau is in between 0 to 1. If suppose this t is in between 0 to 1, then what will be the value of this integration? So we have to take the different cases. Case number 1. Case number 1. When the t is in between 0 to 1, in this case, the maximum frequency deviation would be 2 pi kf and it is 0 to t is between 0 to 1. What is the expression between 0 to t? This is 0 to t is in between 0 to 1. So this is slope is 1, so only t. So we will get tau d tau. So it is 2 pi kf tau square by 2 limit from 0 to t, 2 and 2 will get cancelled and we will get pi kf into t square. Pi kf into t square. Correct? For 0 to 1. 0 to 1. For greater than 0, equal to and less than 1. This part is clear or not? This case 1 is clear or not? Anyone having any doubt? Anant, Vikram, Ashish, anyone having doubt how we are getting this case number 1? Now we will define for the case number 2 when
t is greater than equal to 1 and less than 2, because the message signal is having 1 to 2, it is having the constant value which is 1. So now it would be delta phi max. The integration is 2 pi kf, integration from 0 to 1, okay, 0 to 1, it is t dt you can write, plus 1 to 2, it is constant which is having 1 again, 1 into d tau, means 1 to t. The upper limit is t, that is fixed. Yes, maximum value is 3 pi kf, Vikram, correct. So 2 pi kf, this is t square by 2, limit is from 0 to 1, and here you will get tau, and limit is from 1 to t. So when we will solve it, we will get 2 pi kf and 1 by 2 in bracket and t minus 1. So 2 pi kf t minus 1 by 2. Okay. So when we multiply it, we will get pi kf into t minus pi kf. In first case, we are getting pi kf. In the first case, we are having a t square by 2. So we will wait. Yes, I think I missed one part. Wait. So this is 2 pi kf 1 by 2 plus t minus 1. So we are writing like this. Now pi kf. Okay, right. It was right. So pi kf, 2 and 2 cancel, and this 2 pi kf t minus 1. Right. It was right. Okay. Now we have the third case. What is the third case? Again, this is between 2 to 3. So 2 to 3, when we solve it for 2 to 3, this is case number 3, when the t is greater than equal to 2 and less than 3. So again, this delta phi will be 0 to 1, it is t dt, and from 1 to 2 it is constant which was 1 dt, and from 2 to t it was minus 1 dt, d tau or dt. So it will be t square by 2, and yes, remember that we have 2 pi kf in common. So this is t square by 2, 0 to 1, it would be 1, it would be minus common, and then t minus of 2, and it is 2 pi kf. So we should get 3 pi kf. This is the 1 1 by 2 plus 1 minus t minus 2, 2 pi kf. So it is 3 by 2, 3 by 2 minus t minus 2 into 2 pi kf, and when we multiply it, we will get 3 pi kf minus 2 pi kf in bracket t minus 2. Okay, and for t greater than 3 also you can calculate. This is the case number 4 for t greater than 4, and for t greater than 4, again when you will write, you will get all the constant, and for t greater than 4, it would be like from here, here and here, it is now minus 1. So these two will cancel each other, and you will get first thing, that means the pi kf. Okay, so answer will be pi kf for the last one. Is it correct? Pi kf. So now for which value of t we will get the maximum?
Suppose I put t is equal to 2, it will be 0. So 3 pi f kf we are getting. In the last case, I am getting pi kf, which is constant independent of time. If suppose I put t is equal to 1 or 2, this is having 1. So if I put 1, it will be 0. If I put 2, then it is a, if it is not equal to 2, na? So we cannot put 2. So we can put any value which is will give you 2 minus 1. Yes, 3 pi kf. If I suppose put t is equal to 2, then if I suppose put here t equal to 2, then also we are getting 3 pi kf, right? So the 3 pi kf will be the maximum value of delta phi max. So now we can say that delta phi max is 3 pi kf. Okay, this is for FM. And for PM we had got KP only. So we wanted to calculate the relation between this. So Kp is equal to 3 pi Kf. This is the answer. Kp is equal to 3 pi Kf. Kp is equal to 3 pi Kf. That is the answer. Right? So in this type of question, you need to solve like this only. Yeah? Directly you cannot say 2 pi Kf. If the message signal is not constant, then you have to be careful. Now what about the second part of this question? We have to calculate the instantaneous frequency in both the case. So what is the instantaneous frequency? So instantaneous frequency for FM, if I want to write, for FM, the instantaneous frequency is FC plus KF into MT. And if I am writing the maximum value of instantaneous frequency, the maximum instantaneous, so the maximum instantaneous will be Fi max is Fc plus Kf into maximum value of Mt. So Fc plus, what is the value of Kf? The value of Kf is given as 1 and the message signal is also having the maximum value 1. So this is Fc plus 1 Hertz. Now for PM, what is the instantaneous frequency? The instantaneous frequency is Fc plus Kp upon 2 pi dmt upon dt. So Fc, Kp is given as 1. So 1 upon 2 pi. And that is nothing but the slope of message. Maximum value of slope of message. So what is the slope of message? The slope of message is also given as 1. Okay, means it is from diagram you can calculate the slope of the message signal is 1. So that is the answer. Fc plus 1 upon 2 pi. Got it? Everyone? Is it clear? Guys, so there is a very important thing going on in our app, that we are running a free mock test for all the electronics student and electrical student, for all the branches in fact. And this is the complete schedule for this, and the link is given in the description for this mock test. So this is free of cost. You should join this because of your learning. Means it is a practice questions you will get here, and it is from 28th October to 3rd November. So you have only 1 days. Tomorrow you have to register. Tomorrow will be the last day to register for it. Now answer this one. Quickly answer this one.
This one is a little bit easy question compared to all the other questions because in the FM generally the formula based questions are quite easy. If it is not a tricky one, and there is no concept, then direct formula. Ashish, have you already joined my Telegram group? If you have joined, then I will share this with you in the Telegram. No problem, I can share this. Yes, Vikram, correct. So all the answers almost you guys have got correctly except the fourth one. It is both. It can be both. Na? It can be both. Angle modulated signal can be treated as both FM and PM. It may be FM, it may be PM, it depending upon the message signal. We cannot decide by looking into the expression of the angle modulated signal. If the message signal is cos, then after integration it will become sine. Then after integration means integration comes in the expression of FM. So that means this is sine, so we can say FM. And if the message signal is sine, then it will come directly in the expression of PM. So this can be both FM or PM at the same time. Now, average transmitted power. So first part of this question, average transmitted power is amplitude square divided by 2. So amplitude of the carrier, that is 100 square divided by 2, you will get 5 kilowatt. So 5 kilowatt you are getting, yes. Second is the peak phase deviation. Phase deviation, that is the peak phase deviation is nothing but the maximum value of the phase. So maximum value of 4 sine 2000 pi t. तो यहाँ से maximum value कितना आ गया 4. तो that is your maximum phase deviation. Peak frequency deviation, तो peak frequency deviation कितना हो जाएगा डेल्टा f. ये हो जाएगा बीटा इंटू एफ एम. ठीक है, बीटा इंटू एफ एम. बीटा कितना है 4, एफ एम कितना है 1000. सो ये आ गया 4 किलो हर्ट्ज. सो 4 किलो हर्ट्ज इज द राइट आंसर. ठीक है, फोर्थ फोर्थ पार्ट में किसी को कोई डाउट? अगर मान लो मैं मैसेज सिग्नल कॉस लेता हूं, सपोज करो कि मैं कॉस ले लिया, ठीक है, तो एफएम का एक्सप्रेशन क्या होता है? एसी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन मैसेज dt. तो इस केस में आपको यहां पे साइन मिल जाएगा, तो फिर आपका एक्सप्रेशन इससे मैच कर जाएगा, तो आप बोलोगे एफएम है. बट अगर मान लो मैं मैसेज सिग्नल साइन ले लेता हूं, ठीक है, और फिर मैं पीएम का एक्सप्रेशन लिखता हूं एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस केपीएमटी, तो आप मैसेज सिग्नल की जगह पे साइन रख दोगे, तब आप बोलोगे कि यही एक्सप्रेशन मेरा पीएम का भी है. तो ये पीएम और एफएम दोनों हो सकता है. ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि मैसेज सिग्नल आप क्या चूज कर रहे हो, वेदर इट इज अ कॉस और साइन. तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये पीएम या एफएम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो डायरेक्टली एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एक्सप्रेशन को देख के डिसाइड करना मुश्किल होता है. इट कैन बी बोथ एफएम एंड पीएम एट द सेम टाइम. ठीक है. गाइस, तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप, है ना. ये ऐप आपको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, बिकॉज ऐप में भी मैं ऐसे ही फ्री सेशंस आपके लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं न्यू क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ. दैट इज फ्रॉम द एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी हैं, रीजनिंग भी है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस भी हैं, ईडीसी के क्वेश्चंस भी हैं,
कंट्रोल के भी हैं, एनालॉग के भी हैं, तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज में फ्री ऐप में रन कर रहा हूँ। तो जो लोग भी, अगर आप ऐप में नहीं आ रहे हो फ्री सेशंस में, तो आप ऐप में डाउनलोड कर लो, फ्री सेशन में ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं ऐसे ही आपका एक पूरा लीडर बोर्ड के थ्रू, यानी पोल के थ्रू मैं क्वेश्चंस देता हूँ, और फिर उसमें लीडर बोर्ड के थ्रू आपका पूरा पार्टिसिपेशन चेक होता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो ये सब आपका उसी का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और आपको अगर 25 के लिए कोर्स एनरोल करना है तो आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं, और उसके लिए आप नंबर जो आपको गिवन है यहाँ पे, उस नंबर पे कॉल करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ऐसा ही एक और सेशन हम लोग कल प्लान कर रहे हैं। तो कल भी 7 PM में हम लोग प्रोकीज के कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोकीज के क्वेश्चंस हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, जिसमें एनालॉग के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके डिजिटल के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के कंबाइंड क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। इसमें कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इंफॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड, क्वांटाइजेशन से रिलेटेड, है ना, कुछ आपके डायरेक्ट बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, मैप और एमएल कोडिंग पे मैं सेशन बिल्कुल ले सकता हूँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली लेंगे, है ना। अब देखो क्राउड अपना जो ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, आप फ्री ऐप में आ जाओ। फ्री ऐप में मैं इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट के लिए एक एक सेशन ले सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैं जनरली वही सेशन प्रेफर करता हूँ जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहेंगे, है ना। तो आप इसको ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपके पहले यहाँ पे आ सके, है ना, फ्री ऐप क्लासेस में, तब फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और भी सेशन आएंगे, है ना विक्रम। तो मैप एमएल पे भी सेशन आएगा। ऐप में तो डेफिनेटली ला सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐप पर थोड़ा मेरे कंट्रोल पे है, यूट्यूब के सेशंस लिमिटेड है, तो और उसका प्लान ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी मैप और एमएल का प्लानिंग नहीं है। तो ऐप में मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, या फिर 15 नवंबर के बाद, आफ्टर 15 नवंबर, मैप एंड एमएल पे भी बेस्ड हम लोग एक यूट्यूब पे सेशन ले लेंगे, जहां पे हमारे पास न्यूमेरिकल ये क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या मैथ क्राइटेरिया होता है, क्या मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्राइटेरिया होता है, ठीक है विक्रम। और किसी को कोई क्वेरी पूछना है, और किसी को कोई डाउट, कुछ चीज पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो, देन वी विल वाइंड अप द सेशन। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? coding is coding is important. Coding is important, but you can leave it, because or you can just go through the few important concepts, because for one particular topic, you if you have sufficient time, then you should approach for that particular topic. Otherwise, because at this point of time when November is running, you have to revise all the previous subjects that you have already completed. If you have already completed full syllabus of GATE and you are left with some topics of the all subjects
then you can go and cover the remaining topic of every subject. Otherwise, you should leave that topic and start giving the test only. Okay. Thank you.